Assalamualaikum. My name is Bilawal Ahmed. It's my pleasure to speak to you all here. I'm a graduate of Sindh Medical College, year 2011. So it's been almost 8 years that I graduated, and I did come in 3 years back with JSMU group to give a lecture on care guidance. But it's my pleasure to be here to give a talk on something that is related to my field. I'm a hematology oncology fellow. I'm a PGY6, which is the last year of my training, and I'll be starting my job. So currently I'm at University of Missouri, and the topic of the presentation today is aplastic anemia. I would keep this talk as a bilingual because I personally would like to share my expressions and emotions, and I think that being in a bilingual language, it's kind of better to understand things that I'm trying to explain. So moving on, before we go to the topic, I think it is very important to realize and to know what is and what are the components of blood. Blood is a very complex organ. Unlike heart, unlike GI tract, unlike liver, kidneys, brain, which are in one place, blood is all over the body. तो उसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम समझे कि blood की जो origin है वो क्या है. तो जो blood की जो origin है, that's called the hematopoietic stem cell. एक cell होता है जो distribute होता है, and that can only be divided into two stem cells and two cells. One is a myeloid, one is a lymphoid. Furthermore, जो myeloid stem cells होता है वो divide होता है into megakaryocytes जो platelets बनाते हैं. दूसरा सेल जो है वो RBC बनाते हैं जो आपका hemoglobin है. फिर monocyte है, neutrophils है, basophils है, eosinophils है. So if you think on this, if you know this schema of how the distribution and how the evolution of a stem cell is done, और blood की जो blood है उसमें कितने तरह के different particles और subtypes है, then you will have a very good idea जब हम किसी disorder की बात करते हैं, blood cancer की बात करते हैं, blood disorder, myeloproliferative neoplasm की बात करते हैं, myelodysplastic syndrome की बात करते हैं, anything associated which has a myeloid in it, आपको समझ आना चाहिए कि the problem will be in the myeloid lineage. Lymphoid lineage, on the other hand, उसके सिर्फ दो divisions होते हैं. It's called a B lymphocyte and a T lymphocyte. And I'm sure everyone here knows कि B lymphocyte का काम होता है immunity करना. T lymphocyte is more memory associated. The B lymphocyte can be distributed into plasma cell, and plasma cells can become multiple myeloma. In short, अगर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो स्टेम सेल होता है वो दो चीजों में डिवाइड होता है. It's called myeloid and lymphoid. Myeloid comprises 80% of the blood cells, जिसके अंदर से आप platelets, RBCs and neutrophils. तो हम जब blood को देखते हैं, जब आप अपने clinical rotations पे जाएंगे, and when you see the blood test और उसमें कुछ 10,000 चीजें नजर आती है, the most important thing that we look at it, and especially in our hematology clinic, जहाँ हम blood cancers को देखते हैं और blood disorders को देखते हैं, तो हम तीन चीजें देखते हैं. एक होती है platelets, कि अच्छा भाई उसके platelets कितने हैं, these are the clotting factors. उसका hemoglobin कितना है, तो इसकी आप सबको normal range पता होनी चाहिए. और उसका WBC count कितना है. Now there is a caveat in this schema. As you guys know, the WBC cells, which are the white blood cells, are your immunity markers. वो आपका infection marker होता है. Infection में वो बढ़ जाता है because your body needs more of the white cells to help attack the infection. और जब ये white cells कम हो जाते हैं, तो your body becomes immunocompromised and it's prone to get more infection. But white cells are compromised of two major cells. One is a neutrophil, one is a lymphocyte. Now you see the neutrophil is coming in from the myeloid lineage, and a lymphocyte is coming in, as the term associates, a lymphoid lineage. The lymphocytes जो B और T lymphocytes होते हैं, myeloid neutrophil से आ रहा है. तो इसका मतलब WBC is associated and it actually is a combination of two cell lineages. जो एक cell
नजर आता है अपने आपके जो सीबीसी की रिपोर्ट होती है. If you also notice, and I'm sure you have heard this term before, called granulocytes. Now, what are granulocytes? So people think granulocytes are neutrophils alone, but any cell with granules in it, like neutrophil, basophil, eosinophil, these are the combination of these three cells are called granulocytes. Infection जब होता है, and I'm sure you have heard about the term called left shift. तो अगर आपको कोई स्मार्ट बनना है अपने राउंड्स में जाके अपना अटेंडिंग को बताना है, अपने कंसल्टेंट को बताना है, hey, this patient is having a fever with and on the CBC there's a left shift. So what is a left shift? A left shift is anything increasing the neutrophil count. That's it. That's a left shift. But there has to be a lymphocyte, the neutrophils count that has to be increased, and not the lymphocyte count. In infections, only a myeloid lineage goes up, and not the lymphocyte. So when you interpret, and especially when you are interested in hematology, but even as a general physician, if you are interpreting a blood check, you can't just say there's a white count of 25,000, which is abnormal. You should look at the differentials and see, hey, is it a left shift? Is it a neutrophil which is elevated, or is it a lymphocyte which is elevated? So I think these are important things, and these are just the basics of hematology. It's a complex field. I love it. It has a lot of micro details on it. But to be honest, it's not as complex as people think that it is. अगर आपको ये basic schema समझ में आ गया, 80% of hematology is good. So just a revision, stem cell divided into myeloid, lymphoid. Myeloid cells are dividing into most of the platelets, RBCs, monocytes, neutrophils, basophils, eosinophils. These three cells are called granulocytes because when you look into the microscope, they have granules, and the lymphoid lineage has B lymphocytes and T lymphocytes. Anything with a lymphoid in it, it's automatically a lymphoid lineage. And that goes along. Now, I'll give you a few examples. So, for example, have you heard about the term called myeloproliferative neoplasm? A myeloproliferative neoplasm, as the term says myeloid in it, it is associated with the problem in this lineage. If you have heard of the term called myelodysplastic syndrome, it has the term myeloid in it, so it is associated with this lineage. If you have heard of the term called chronic lymphocytic leukemia, CLL, it has lymphoid in it, so it is associated with the lymphoid lineage. If you have heard of the term called acute lymphoblastic leukemia, it has a term called lymphoid in it, so it's associated with the lymphoid lineage. So it's so much easier to distinguish हर जो blood cancer होता है, it's either a myeloid problem or it's a lymphoid problem. So अगर आपने उसको identify कर लिया, तो you will know कि which lines are affected and which cells are affected, and it makes life so much easier. Now going to the topic, अगर आपको basics of hematology समझ में आ गई, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज का जो topic है वो है aplastic anemia. Now what is aplastic anemia? I like to start usually when I give my presentations, I usually give a case on the start so that the people have an idea कि real case को हम बात करते हैं और इनसे हम शुरुआत करते हैं ताकि you have something going on and you're making a connection. So a 22-year-old female, 22-year-old, she's not 92-year-old. A 22-year-old female comes to the PCP, primary care physician, with marked fatigue and easy bruising. In addition, she developed bacterial pneumonia and otitis media in the last 6 months. A CBC was done. Neutrophil count 250. If you don't know the normal limits, so anything more than 2,000 is normal. So it's neutrophil count बहुत low है. Platelet count is 12,000. Normal is more than 150 to 450. Reticulocyte count is low, which is a precursor of hemoglobin. So for example, अगर आपका एक normal body है and if you're losing blood और आपका hemoglobin is 10, your reticulocytes count will be higher. It's actually a factory which makes a lot of RBCs, and they are immature RBCs. That's called reticulocytes. So if your body is losing blood for so many reasons, either it's hemolyzing, either it's a GI bleed, either it's from bleeding from somewhere of something else, your body tries to compensate the loss of blood by producing more amount of blood, and that's the reticulocyte count. And if you see the hemoglobin is young female guys only 5.2, so what would you expect in the normal retic count? It should be really high.
अगर इसका retic count is really low, which means this is a bone marrow problem. So retic count is a great test. It kind of tells and it kind of differentiates if it's a bone marrow disorder versus if it's a disorder, or if the hemoglobin is low because of the bone marrow, or if the hemoglobin is low because a young female is losing blood because of her menstrual cycles or something else. Usually it should not be less than 7, but it's 5.2. And MCV is the size of the blood. So MCV means that normal MCV is between 80 to 100, as you guys know. So anything more than 100 is called macrocytic anemia. Anything less than 80 is called microcytic anemia. If it's between 80 to 100, it's called normocytic anemia. तो उसका MCV बढ़ा हुआ है. तो इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आता है? मसला क्या है? मसला ये है कि देखो उसका माइलॉइड लीनिएज इज टोटली अफेक्टेड. उसका न्यूट्रोफिल गया हुआ है, जो माइलॉइड लीनिएज, प्लेटलेट्स उसके गए हुए हैं, उसके रेटिक काउंट बिल्कुल डिप्रेस हुआ है, एंड हीमोग्लोबिन इज लो. तो उसका एक माइलॉइड लीनिएज इज टोटली अफेक्टेड. बट द थिंग इज, वी नो दिस इज अ बोन मैरो प्रॉब्लम बिकॉज यूजुअली जब हीमोग्लोबिन इतना कम है तो उसका रेटिक काउंट हाई होना चाहिए. तो इसका मतलब बोन मैरो ज़ाया हो गया. In 22-year-old female में, what would be the reason to have this? So what do you do? कैसे करते हैं उसको इन्वेस्टिगेट? सो आप उसका ज़ाहिर है आप उसका ब्लड में रिपोर्ट देखोगे. Personally, I like to see the blood on the smear made in the microscope. उसके अंदर मैं देखता हूँ कि what are the findings, RBCs कैसे लग रहे हैं, प्लेटलेट्स कैसे लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, कम हो गए, नहीं है. अगर कोई blast cells, what are blast cells? Blast cells are immature cells which are found in leukemia. तो अगर कोई leukemia का कैंसर वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो what are the next step? अगर एक young female के अंदर इतना abnormal blood count with a low retic count indicating a bone marrow process is there, first step, do a bone marrow biopsy. Bone marrow biopsy क्या होती है? Bone marrow biopsy is a very simple procedure where you put a needle in your back on the hip bone, और आप ड्रिल करते हैं उसको. एक्सप्लेनेशन में थोड़ा फन लगता है मुझे, लेकिन जब पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं तो वो बोलते हैं यार अब मेरी बॉडी के जो हिप बोन है उसको आप ड्रिल करेंगे. मैंने कहा बिल्कुल ड्रिल करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज वी गिव लोकल एनेस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग. इट्स अ 15-minute प्रोसीजर, बेड साइड पे हो जाता है. यू पुट अ ड्रिल इन, you take a chunk of the tissue out, and before that you also take the sample, इसको aspirate कहते हैं. तो you take an aspirate and you take a core biopsy. और bone marrow biopsy से आपको असल में उसके bone marrow का जो हालत है, जो फैक्ट्री है, उसके बारे में आपको पता चलता है. And bone marrow is a factory machine of your blood, and it's usually found in the older patients like us. It's usually found in the long bones, hip bones, and things like that. बच्चों के अंदर वो, if you kind of remember your embryology lectures, वो शुरू होता है yolk sac से, फिर liver में जाता है, spleen में, and then eventually goes to the bone marrow. This is why it's called bone marrow, because it lives in the bone. तो और बायोप्सी के अंदर आप देखते हो कि उसकी सेलुलैरिटी कितनी है, उसका रेटिकुलम स्टेन कितना है. तो by definition of aplastic anemia, it's a bone marrow disorder, hematopoietic stem cell disorder associated with markedly reduced marrow cellularity. The marrow है उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो फारिग चल रहा है वो marrow, and a deficient bone blood cell production. Classification होती है, depends on the severity of the aplastic anemia. उसकी हम बात करते हैं कि क्या definition होती है, और उस basis पे हमें पता चलता है कि क्या ये severe aplastic anemia है, very severe aplastic anemia, या इतना severe aplastic anemia नहीं है. अब देखो ये bone marrow है. This is a normal bone marrow. इसमें देखो कितने सारे cells हैं. I mean, there are some vacuoles, that's fine, but if you see there are so many cells. The blue cells are megakaryocytes, the red cells are erythroid precursors, जो RBCs बनाते हैं, megakaryocyte platelets बनाते हैं. ये सेल देखो फारिग चल रहा है, मतलब full vacuole, fatty vacuoles. 22-year-old lady के अंदर अगर ये आपने 90 साल की औरत में देखा है ना, तो उसका मैरो तो फारिग चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, because ये जो bone marrow है, as you grow older, उसका जो cellularity है वो decrease होती है, and there's an equation for it is जितनी आपकी age होगी उसको आप 100 से माइनस करो तो उतनी आपकी bone marrow cellularity होनी चाहिए. तो for example 90-year-old woman में 10%, 90 minus 100,
10% सेलुलर बोन मैरो उसका नॉर्मली होता है, लेकिन 20-year-old में अगर उसको 100 से माइनस कर दो तो उसका बोन मैरो सेलुलरिटी शुड बी 80%। नाउ इसका 80% नहीं, इसका 10% है। तो एज सर 90-year-old वुमन में अगर ये नजर आए तो सही है, अगर 20-year-old वुमन में मुझे ये बोन मैरो नजर आया तो आई विल बी लाइक मैन दिस इज नॉट गुड। तो उसके लिए तो दिस इज काइंड ऑफ हाउ यू डायग्नोज एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें आप मैरो को देखते हो, उसकी कोर बायोप्सी को देखते हो, and then you go forward with it. So there are different kinds of aplastic anemia. Not going into a lot of detail. It needs a separate lecture, but there are two kinds. एक होता है inherited, तो बच्चा पैदा होता है उससे. एक होता है acquired. Acquired होता है जब आप 20 साल के हो जाते हो, ज़ाहिर है आप अपनी childhood से निकल गए हो, उसके बाद आपको हुआ है प्रॉब्लम. तो अगर बहुत सारी ऐसी illnesses होती हैं, like Fanconi's anemias, आपने I don't know if you have heard about it. Very rare. So aplastic anemia is a very rare disorder, and we'll come to the statistics later, but it's a very rare disorder. लेकिन हमारे मुल्क में, अमेरिका में बहुत कम होता है, लेकिन हमारे मुल्क में उसकी जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा है. So I think it's a good thing to that you should know about it. You should always think about it. बड़ी ये डिजीज है जिसको हमें फौरन से क्विकली कैच करके ट्रीट करना है. तो एक बंदा जो पैदा होता है वो अगर एक यंग न्यू बोर्न है या 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है और उसका बोन मैरो फेल हो जाए, उसके अगर आप सीबीसी करो और उसके सीबीसी में प्लेटलेट्स कम है, हीमोग्लोबिन कम है, व्हाइट काउंट कम है, तो दोज आर यूजुअली इनहेरिटेड, वो पैदा उससे होते हैं, लाइक फैंकोनीज एनीमिया, डिस्कर्टोसिस, थिंग्स लाइक दैट. अक्वायर्ड होते हैं, वो होते हैं जो बाद में होते हैं. एंड आई विल डिस्कस अबाउट कि एक्वायर्ड कैसे हो गया यार, एक नॉर्मल बंदा है उसको बोन मैरो का डिसऑर्डर कैसे हो गया, प्लास्टिक एनीमिया कैसे हो गया, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, क्यों वजह है. तो द रीजन दैट वी नीड टू नो द डिफरेंशिएशन इज बिकॉज द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट. अगर एक बंदा इनहेरिटेड पैदा उससे होता है तो उसकी ट्रीटमेंट एंड्रोजेंस होती है. एक बंदा जब अक्वायर्ड होता है, जब वो बड़ा होता है, जब उसको बाद में होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होती है. विल टॉक अबाउट इट, बट इन द एंड the only curative treatment is bone marrow transplant, stem cell transplant. तो आपको आपका बोन मैरो तो वैसे ही फारिग चल रहा है, तो आपको किसी और का बोन मैरो की जरूरत है. you need cells from some healthy bone marrow person who is actually matched. आपका HLA मैच होना चाहिए. यूजुअली इट्स योर सिबलिंग्स, लेकिन कभी कभार आपके सिबलिंग्स आपके मैच नहीं होते, तो यू गो फॉर ग्लोबल मैच या नेशनल मैच या जो भी आपकी मैच डायरेक्टरी है बोन मैरो की, आप उसमें जाके लोगों को ढूंढते हैं और आपका HLA मैचिंग होती है, तो उससे so that's all the curative one. तो क्लासिफिकेशन की जैसे मैंने बात की, अगर बच्चा पैदा हो रहा है फैंकोनीज एनीमिया, डिस्कर्टोसिस कंजेनिटा, शॉमन्स डायमंड syndrome, familial aplastic anemia, Down syndrome. Patients with Down syndrome can have bone marrow disorder. तो ये आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानने की जरूरत है कि there are kids who can be born with aplastic anemia, and those can be associated with these kind of inheritance. Now, I'm not a pediatrician, so I don't have any. I don't see a lot of it, so I don't have a lot of command on it. But if anyone is interested to go to peds, then I think I'm sure they need to know different kind of pediatric illnesses and illnesses that people newborns are born with. हम बात करेंगे एक्वायर्ड की. अच्छा जी, एक 25 साल का लड़का है, उसको जो है उसका बोन मैरो फारिग हो गया, क्यों भाई? तो उसकी वजह हो सकती है कि क्या you have to ask for and you have to question क्यों हुआ इसको. So the what are the reasons for aplastic anemia? तो एक उसकी रीजन है irradiation. अगर किसी को किसी वजह से रेडिएशन मिली है because of some prior cancer, और ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं एज लिमिट की बात इसलिए कर रहा हूँ यंग लोगों की, क्योंकि यूजुअली दीज आर द इलनेसेस दैट आर फाउंड इन यंगर पॉपुलेशन 20s एंड 30s में, लेकिन यू कैन हैव एप्लास्टिक एनीमिया इन 60s एंड 70s. so किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उसको रेडिएशन मिली थी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, 10 साल के बाद अगर उसका पूरा बोन मैरो सप्रेस हो गया, तो दैट्स बिकॉज ऑफ द रेडिएशन और द कीमोथेरेपी. So cytotoxic agents like chemotherapy, NSAIDs, ibuprofen, Aleve, Panadol, things like that. उससे हो सकता है. एंटी एपिलेप्टिक्स है. वायरसेस, हेपेटाइटिस वायरस, parvovirus is associated. आपका बोर्ड क्वेश्चन भी होना चाहिए कि
अगर आपको you have to choose any one thing, then pyrovirus is something that you have to rule out. USMLE step 1 or 2 का question है ये. और sorry, HIV. So you have to rule out HIV patients के भाई HIV virus तो क्या आपका bone marrow suppress नहीं कर रहा है. And then there are immune diseases, thymoma, thymic carcinoma. Thymoma का सवाल आता है कि अगर एक बंदे को thymoma is there's a thymus gland here in the mediastinum, वो अगर बड़ा हो जाता है तो उस वजह से आपका बोन मैरो वो क्या करता है कि वो बहुत सारे एंटी साइटोकाइन रिलीज करता है जो आपके बोन मैरो को सप्रेस करते हैं. तो थाइमोमा की वजह से जो है वो आपका बोन मैरो फेल हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है. PNH, paroxysmal nocturnal hematuria, is a disorder of the bone marrow and blood disorder. जिसमें there is a CD55 and 59 एंटीबॉडी आपके ब्लड को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है. हिमोलिटिक अनीमिया होता है, थ्रोम्बोसिस होती है, वो आपके बोन मैरो को सप्रेस कर सकती है. प्रेगनेंसी कैन बी एसोसिएटेड बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या होता है, there is a fetus, right? There is a new person in a female. तो कभी कभार उसकी antibodies can suppress mother's immune system. Yeah. But the most common cause, like a lot of things in medicine, is idiopathic. Idiopathic का concept मुझे जब मैं medical school में था तो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है. Idiopathic का मसला होता है जब हमें कुछ पता नहीं होता तो हम उसको कहते हैं idiopathic. So there are so many reasons in medicine that we don't know why it happens. अब किसी को कैंसर क्यों हो जाता है 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में? Idiopathic, no reason. So that's more of the reasons. 70% of the causes of aplastic anemia वो idiopathic होती है. So epidemiology की मैं बात कर रहा था तो aplastic anemia United States और Western Europe में बड़ा rare है, लेकिन incidence in China, Southeast Asia, Mexico, third world countries इनमें ज़्यादा है. ज़्यादा होने की वजह क्या हो सकती है? इनमें ज़्यादा होने की वजह ये हो सकती है कि इनमें एक्सपोजर टू लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी जो हमें डेली रूटीन में पोल्यूशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, सो एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वो बोन मैरो को सप्रेस कर सकते हैं. बट एज आई सेड इडियोपैथिक है. लेकिन अगर एक चीज़ एसोसिएटेड है किसी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस से तो उसकी वजह ये हो सकती है कि उसमें फिर आपको कितने टॉक्सिन से आपको रोज एक्सपोजर मिलता है डेली बेसिस पे. तो वो सोचना चाहिए. यूजुअली प्राइमरली जैसा मैंने कहा कि ये यंग अडल्ट्स की डिजीज है, लेकिन दूसरा इसका एक पीक आता है जो 60 इयर्स एंड ओल्डर में होता है. तो देयर इज अ टू पीक, एक 2030s में आता है, फिर 60 के बाद आता है. तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? अब क्वेश्चन अभी देखो ना, अब मेडिसिन में आपको जो है ना दिमाग करना चाहिए. अगर एक चीज का बोन मैरो किसी का फारिग चल रहा है तो उसमें क्या मसला होगा? अनीमिया होगा, उसका हीमोग्लोबिन 5 से 6 चल रहा है तो उसको सिम्टम्स क्या होंगे? वो चल नहीं पाएगा, उसको सांस फूलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फटीग है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा. अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी ना, जाहिर है. तो ब्लीडिंग होगी, ब्रूजिंग होगी. अगर न्यूट्रोपेनिया होगा जिसमें आपका व्हाइट सेल का जो न्यूट्रोफिल काउंट है वो कम हो जाएगा, जो आपका इम्यूनिटी मार्कर है वो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन होना है. तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, या आपको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए. अनीमिया में आपको क्या होना है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होना है, आपको न्यूट्रोपेनिया में क्या होना है. तो दीज आर द एप्लास्टिक बोन मैरो फेल हो चुका है. और ये वेरी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये अनीमिया तो आपको फिर 1000 चीजों से अनीमिया हो सकता है, फिर उसके सिम्टम्स भी फिर हो सकते हैं. फटीग एक वायरस सिम्टम है जो मैं अपने पेशेंट को पूछता हूँ, भाई आपको फटीग होती है? हर कोई कहता है होती है, चाहे उसको स्टेज 4 कैंसर हो, चाहे उसको कोई ब्लड डिसऑर्डर हो. फटीग मुझे भी होती है, फटीग आपको भी होती है, पढ़ के आप फटीग नहीं हो जाते. तो फटीग इज अ वेरी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम. सो मैं बड़ा केयरफुल होता हूँ अपने पेशेंट से सवाल पूछने के लिए कि आपको फटीग तो नहीं है, क्योंकि फटीग तो भाई ना सबको होती है. तो मॉडल इसका पैथोजेनेसिस जो होता है प्लास्टिक एनीमिया का, इसकी थ्योरीज हैं. इसकी एक थ्योरी है, जल्दी से फारिग करेंगे इसको, कि एक होती है टॉक्सिन मेडिकेशन. अगर कोई टॉक्सिन्स आपको एक्सपोजर हुआ है, कोई मेडिकेशन आपको मिली है, जैसे मैंने कहा हम यूज करते हैं बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, या कोई इन्फेक्शन, पारो वायरस, एप्सिन ईबीवी, एप्सिन बार वायरस, एचआईवी, ऐसे वायरसेस हुए हैं तो वो आपके बोन मैरो को सप्रेस कर सकते हैं. दूसरा ये हो सकता है कि मैरो का कोई इंटरनल स्ट्रेस हो,
जो इडियोपैथिक हो सकता है, जो किसी और वजह से हो सकता है, जो किसी कैंसर की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से बोन मैरो फेल हो सकता है। तीसरी वजह इसकी ये बताइए कि कोई एक्सटर्नल चीज़ आ रही है, डायरेक्ट बोन मैरो को सप्रेस कर रही है। तो ये सारी थ्योरीज़ हैं। इन शॉर्ट इन थ्योरीज का मकसद ये है कि बोन मैरो is affected by external stresses, medications, infections, and could be internal stresses, and both can cause any type. इसके लिए कोई जेनेटिक म्यूटेशन होना जरूरी नहीं है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि एक बंदे को अगर 25 साल की उम्र में बोन मैरो का प्रॉब्लम हो गया है, कैंसर हो गया है, तो क्या उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है? नहीं भाई, जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, उसको अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया है। उसको देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीजंस कि उसको ये चीज हो गई है, एंड देयर आर नो रीजंस टू एक्सप्लेन दैट। दिस इज, इट कुड बी इडियोपैथिक, इट कुड बी एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस, समटाइम्स देयर इज नो रीजन फॉर इट। सिमिलरली हियर, तो हमने बात की थी कि देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। तो जो सिवियर क्लासिफिकेशन होती है उसके अंदर डेफिनेशन ये है कि अगर आपका न्यूट्रोफिल काउंट 500 से कम होगा, नॉर्मल काउंट कितना मैंने कहा था 2000, तो 500 से कम होना है। प्लेटलेट्स टू 20,000 से कम होना है, नॉर्मल कितने 150,000। और रेटिकुलोसाइट्स अगर डिप्रेस्ड है और बोन मैरो सेलुलरिटी 25% से कम है, तो उसको बोलते हैं सीवियर। होने कितनी चाहिए बोन मैरो सेलुलरिटी? एज माइनस द 100। तो 20 साल या 25 साल या 30 साल की 30 साल के लड़के की, मेरी 30 साल की उम्र है, 30 साल के लड़के की मेरी बोन मैरो सेलुलरिटी होनी चाहिए 70%। लेकिन अगर 25% से कम है तो सिवियर। वेरी सिवियर ये होता है, उसकी सब इजी क्राइटेरिया है। न्यूट्रोफिल काउंट मोर लेस देन 200, बहुत ही आप इन्फेक्शंस प्रोन हो जाते हो क्योंकि देयर इज नो इम्यूनिटी इन द ब्लड। और नॉन सिवियर जो मॉडरेट कहते हैं, वो अगर दोनों कैटेगरी को फिट नहीं कर रहा तो वो नॉन सिवियर कहलाया जाता है। तो इजी है। वेरी सिवियर इज लेस देन 200 ऑफ न्यूट्रोफिल्स, और सिवियर होता है जिसमें लेस देन 500 होते हैं न्यूट्रोफिल्स। बोन मैरो जो है वो 25% से कम होता है। अब प्लेटलेट जो है वो 30 और 20,000 से कम होते हैं। तो वर्कअप कैसे करते हैं, हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया। हमने उसका सीबीसी करना है, उसका हमने ब्लड चेक करना है, बोन मैरो बायोप्सी करनी है फॉरन से। फैनकनी एनीमिया जो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए हम टेस्ट करते हैं कॉल्ड क्रोमोसोम ब्रेकेज टेस्ट। फिर देयर इज अ डिस्केरेटोसिस कंजेनिटा, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं टेलोमीटर लेंथ। फॉर पीएनएच व्हिच इज अगेन अ बोन मैरो डिसऑर्डर, वी डू फ्लो साइटोमेट्री। वायरसेस के लिए तो वी कैन डू हेपेटाइटिस पैनल्स, ईबीवी, एचआईवी टेस्ट करते हैं हम, एंड पार्वोवायरस B19, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। And autoimmune disorder के लिए we can do an autoimmune panel, anti-nuclear ANA. दूसरे workup, I don't expect those workups to be done in countries which are I mean financially तो इतनी strong नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका है, यहाँ पर वैसे ही कोई हेल्थ केयर पे कोई हज़ारों लाखों डॉलर को फारूक में ज़ाया होते हैं यहाँ पर, तो हम भी यहाँ टेस्ट कर रहे होते हैं नए नए। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बड़ा काम का टेस्ट है यहाँ पर, जो we do it to check for mutations. The reason is कि हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं कि कैन वी टारगेट, दिस इज aplastic anemia is a hard disease to take care of, but if we have a next generation sequencing test जो gives us exact mutations, the problem clear है, तो we can actually take care of it better. Just wanted to give it an update. So therapy क्या होती है? Therapy, अगर किसी को aplastic anemia है and you don't treat it, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना 6 महीने से कम रह जानी है. It's a very severe disease, very important, but is curable. आपको मैंने बताया कि the problem with aplastic, there is no bone marrow, which means there is no immunity, so which means that there are so many infections around this, हमारे इर्द गिर्द हैं, तो the problem is not the bone marrow itself, the problem is you'll succumb to infections. हमारे इर्द गिर्द इतने infections होते हैं कि हमारी अगर immunity ना हो तो we can just die in few days. So it's very important that we need to have our immunity. So without treatment, this is a very fatal disease. There is cases अगर ये disease किसी वजह से है, like for example if you're taking a medication like antibiotics या ibuprofen या Panadol, और उस वजह से आपका bone marrow fail हो गया, and if you have stopped that medication and you have identified, or if your doctor has identified the medication is causing it,
there's a chance कि आपको bone marrow recover हो जाए, but those are rare instances. Usually you need like treatment that we'll discuss. तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होती है उसको कहते हैं सपोर्टिव केयर. सपोर्टिव केयर का क्या मतलब होता है कि you're not actively taking care of the disease, but you are helping your body to fight infections या blood loss. For example, अगर आपके platelets अगर 10,000 से कम है normal 150,000. मैं आपके दिमाग में बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ because you need to know the normal values for these things. आपका लैब के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू लिखी होती है वो उस पर डिपेंडेंट ना हो, आपको खुद याद होनी चाहिए. तो प्लेटलेट लेस देन 10,000 अगर हैं तो देयर इज एन इंडिकेशन फॉर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन. रेड ब्लड सेल लेस देन 8 है लेकिन 7 आजकल की रिकमेंडेशंस है, तो 7 से अगर कम है या कोई कार्डियक डिजीज है तो उसके लिए 8 है, क्योंकि फॉर अ पेशेंट हु हैव कार्डियक डिजीज उसके लिए वी नीड मोर ब्लड in their body. या symptomatic anemia है, shortness of breath है, तो उसके लिए you give blood transfusion. अगर आपने बहुत सारा ब्लड किसी को दे दिया है तो पता होता क्या नुकसान उसका? उसका नुकसान ये होता है कि उसके अंदर आयरन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है. तो you give like iron chelators to take care of that. अगर आप ब्लड अगर किसी को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो we have to make sure, and I'm not sure ये जगह ये facility हर जगह है. I'm sure it's an AKU, but I'm not sure in Jinnah we can reduce the blood products. जिसमें we can remove lot of antigens and antibodies, so that blood जो होता है वो बड़ा mashed blood होता है, but that's one part of it. उसके नीचे हमारी बहुत सारी different particles होते हैं that can be actually reduced. उसके लिए अलग एक फिल्टर आते हैं और बहुत सारे एक्सपेंसिव डिवाइसेस आती है जो ब्लड को प्योर कर सकें. तो मेक श्योर दैट वी हैव टू गिव लिको रिड्यूस ब्लड टू दोस पेशेंट्स. ताकि उनके पास तो वैसे ही कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो अगर आपने किसी को ब्लड देना है उनको जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने किसी को ब्लड दिया जिसके अंदर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है जो बेनाइन होगा नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन उनके लिए बड़ा सीवियर होगा, तो ये जरूरी है. ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि डोनर्स जो होते हैं ना वो फैमिली मेंबर नहीं हो सकते इस डिजीज में. तो आप ये ना कहें कि अच्छा जी मैं आपको ब्लड दूंगा, मेरा भाई को ये हो गया. नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, अगर मैंने बताना गया, लेकिन हम 2 मिनट बात करते हैं. होता ये कि जब आपकी फैमिली होती है तो आपके पास एक खास एंटीबॉडी होती है जो वो सिर्फ आपकी फैमिली मेंबर्स में होती है, तो वो उन्हीं से रिएक्ट करती है. नॉर्मली अगर आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मल है तो वो एंटीबॉडी आप अपने फैमिली मेंबर को दे सकते हो विदाउट कॉजिंग एनी ट्रबल, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम उसका टेक केयर कर देता है. यही ब्लड अगर आप किसी और बंदे को देते हो, उसके पास वो एंटीबॉडी होती नहीं तो वो रिएक्ट ही नहीं करता, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. लेकिन अगर यही ब्लड आपने अपने रिलेटिव को दिया है जो बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, लाइक एप्लास्टिक एनीमिया, तो उसको बहुत रिएक्शन हो सकता है उससे, और उसको लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हो सकते हैं. क्रॉनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हो सकती है, अगर आपने उसका GVHD का नाम सुना हो तो. सो फैमिली मेंबर्स ब्लड नहीं दे सकते. ज़ाहिर है आपको ड्रग्स अवॉइड करनी है जो कॉज करती है लो प्लेटलेट्स, थिंग्स लाइक दैट. एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती है जब तक बंदे को इन्फेक्शन ना हो. तो ट्रीटमेंट, अगर क्योर की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट जो है वो ट्रांसप्लांट है, लेकिन ट्रांसप्लांट जो होता है सिर्फ 40 इयर्स से कम लोगों का होता है, बिकॉज जो whatever the clinical trials that we have not shown any benefit of transplant of if people more than 40 years get it, and 80% of the time it's curative, and that's the only thing that can cure this disease. So if you, unfortunately, if any one of you that you know of, or if your patients have this disease, then you have to refer to a transplant center. So bone marrow transplant ja hota hai, you need to refer them to them. Then there is a treatment called ATG, which is Anti-Thyroid Globulin, and cyclosporin. It's actually given for patients who are not eligible for transplant or who are above the age of 40 years who cannot get transplant regardless. तो हम उनको ये drug देते हैं, and it's a 1-year drug. This is kind of a common schema of aplastic anemia. अगर आपको acquired severe aplastic anemia हुआ है, if you have an HLA-MS sibling and if you are less than 40 years, you can do the transplant. If you are more than 41 to 60 years, आप इसको ATG and cyclosporin दो. अगर कोई response नहीं आया तो you can try transplant, but the transplant rates are not as great.
If you notice, अगर आपके पास कोई HLA मैच लोग नहीं हैं, आपका मैच नहीं है, या आपका कोई भाई या बहन नहीं है जो आपका मैच हो, अगर आप 20 साल से कम होते हो, तो there is something called an umbilical cord transplant, which means that you don't have to have a match, but एक umbilical cord जो एक बच्चा पैदा होता है, आप उससे blood लेके आप transplant कर सकते हो. And then if you're 0 to 60 years, अगर आपके पास ज़ाहिर है कोई मैच ही नहीं है, तो you give ATG and cyclosporin. Similarly with more than 60 years भी आप ATG and cyclosporin देते हो. So आप देखो कि इसमें treatment options इतने ज़्यादा नहीं है, ना इतने अच्छे हैं. तो transplant is the curative one. It's a very morbid procedure. अगर आपको transplant के बारे में पता हो कि कैसे transplant होता है, bone marrow transplant और stem cell transplant, so इतना straightforward procedure नहीं है, but शुक्र है कराची में ये facility है transplant की institutions में, तो you should be sending the patients there. Corticosteroids like prednisone, dexamethasone, we always think कि अगर कहीं भी bone marrow suppress होता है, like there are so many other illnesses like ITP, TTP, जहाँ पर platelets low होते हैं, वहाँ हम bone marrow को हम थोड़ा सा steroid देंगे तो वो जाग जाएंगे वापस. Not in this case. हम यहाँ पर bone marrow को steroids देंगे तो there will be an increased risk of infection, which is bad. And androgens जो usually are used in inheritant aplastic anemia patients, वो should not be used in patients who have acquired aplastic anemia. So just concluding on my lecture, wanted to just keep it under 30 minutes, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा हो गया. So key points, aplastic anemia जब होता है, जब आपका bone marrow हो जाता है फारिक हो गया, आप उसके पास कुछ करने को नहीं है, तो वो आपको कर देता है बीमार. And when you get sick because you have infections, you can die. So the only cure for this is allogeneic transplant from either your sibling or from anyone else who is your match. And the transplant can only be done if the patient is less than 40 years. If the patient is more than 40 years or older patients, तो उसके लिए we have a treatment called ATG plus cyclosporin combination. एक साल के लिए दी जाती है, पाकिस्तान में available है. And if the patients एक चीज है, अगर आपको हो तो जो different kinds of ATG होती है, एक होती है horse ATG, एक होती है rabbit ATG. Horse ATG और ये real में horse और rabbit से निकलती है. तो what you do is like आप horse को inject करते हो with ATG, और अब उसका ब्लड निकाल के उसकी जो एंटीबॉडीज होती है वो आप इंसान को देते हो. तो दोनों हलाल है. लेकिन horse ATG is usually more expensive, so developed countries में horse ATG यूज होती है. Rabbit थोड़ा गरीब आदमी होता है तो वो थोड़ी developing countries में यूज होती है. Both are good, but yeah, horse ATG is more effective. So this is where I conclude. This is a presentation in collaboration with JSMU आना, जो North American physicians यहाँ पर हैं मेरी तरह. हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितनी हमने information हमने लिए हैं यहाँ पर हम ले रहे हैं ट्रेनिंग में, आपको हम दें. और कोई questions हो, कोई सवाल हो, not only with aplastic anemia, with any kind of cancer. I do consult people. लोग आते हैं, सवाल करते हैं, second opinions. किसी के घर में किसी को मसला है या किसी का पेशेंट है किसी के पास जिसको सेकंड ओपिनियन चाहिए कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज कैंसर इज रियली अ टफ डिजीज, अनलाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो सही हो जाती है. कैंसर इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज. The most welcome to email me if you have any questions regarding this presentation, or if you have any questions about any hematology, oncology subjects. Feel free to reach me out and I'll be happy to guide you. So here I'll conclude my presentation, and I think we should be stopping recording. Thank you.